કેમ છો? મજામાં. How's it going? મજામાં તમે કેમ છો? Perfect आर्या. तो आर्या ने अपने पापा को कब कहा कि मैं बड़ी होकर क्रिकेटर बनूंगा? शुरुआत कहाँ से हुई? So my father is already a cricket coach, as you know. Yes. तो बचपन से ही मेरे हाथ में बैट होता था. So आर्या, स्कूल में क्रिकेट के अलावा do you have a Mahendra Singh Dhoni kind of story के फुटबॉल पहले फुटबॉल से प्यार हुआ या you played a lot of other sports as well or were you only into cricket? मैं एक्चुअली अंडर 14 मेरे डिस्ट्रिक्ट सूरत के लिए फुटबॉल टीम में भी खेला हूँ. Which cricketer inspired Aarya Desai the most कि यार इसके जैसा बनना है? I think you already know the answer. It's Virat Kohli. Give me a few names, Aarya, if you can. कोई ऐसे खिलाड़ी जिनसे आपको कुछ सीखने को मिला हो? One would be Dinesh Karthik, DK भैया, and second would be Shubman भैया. They are genuinely nice people also. So I've heard. Yes. आपने डीके की बात करी, आपने शुभमन गिल की बात करी. अब थोड़ी आपकी बात करते हैं आर्या. आपका जो बैटिंग स्ट्राइक रेट है यार कमाल का है. मतलब 100 से नीचे तो कभी नहीं गिरता. क्या रीजन है इसके पीछे? आप जल्दी में हैं आर्या? आप बोल रहे हो कि जो स्ट्राइक रेट 100 की है वो मेरे को लगता है कि काफी नेचुरल है. मैं एक्स्ट्रा ट्राई नहीं करता हूँ. कहते हैं ना हवाओं में शोर है कि अगला वॉशिंगटन सुंदर जो है वो बहुत जल्दी आने वाला है. So what do you say about that comparison, Aarya? So first of all, I really appreciate that comparison. Instead of batting, I bowl quite similar to him. Even I am a tall off spinner. So what's your advice to the youngsters to keep the josh high? कहते हैं ना how's the josh? One message I would like to give would be that one should have a vision and clarity in life. अगर ये तो आपके पास है so that means you know what you want in life. So what we'll do is you're the batsman, I'm the bowler. I'm going to bowl you 6 deliveries and let's see how you tackle them. Let's see if you get a strike rate of above 100. Let's go. It's a rapid fire round. It's a rapid fire round, absolutely. Boom, boom, boom. So Aarya, question number 1 is one IPL team you would like to play for in the future, Aarya? KKR. KKR. Fair enough. As I said, Aarya, you're the future of our country. And we really hope that you go leaps and bounds, you go places, and you make India proud, Aarya. Thank you so much. Thank you so much for having me. I really appreciate it. Ladies and gentlemen, बहुत स्वागत है आप सबका. Very good evening to you. आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल शख्स हैं. नाम है आर्या देसाई, currently the captain of the Gujarat under-19 cricket team, ladies and gentlemen, while we are recording this interview. अब आप जब ये इंटरव्यू देख रहे हो तब वो कहां तक पहुंच गए हैं आपको हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. काफी मैं कहूंगा वेव स्प्रेड कर रहे हैं अक्रॉस द नेशन एज फार एज हिज बैटिंग एबिलिटी इज कंसर्न, एज फार एज हिज बॉलिंग एबिलिटी इज कंसर्न. कहते हैं अगले वॉशिंगटन सुंदर यही है यार. स्वागत है आर्या देसाई का, लेडीज एंड जेंटलमैन. आर्या, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू माय फ्रेंड. Good evening, Ishan. Thank you for having me here. કેમ છો? મજામાં. How's it going? મજામાં તમે કેમ છો? Perfect, Aarya. Very well. Good to see you and good to see you healthy. आगे बढ़ने से पहले आर्या यही जानना चाहूंगा आपसे यार, कोरोना काल में आप दुरुस्त हैं? I hope everything is okay. Everything okay around you? Everyone's okay. Everything's okay around me. We are glad you're fine, Aarya. You look fit. And you look like one for the future for the Indian cricket team, Aarya. So Aarya, we'll begin. My first question to you, my friend, is शुरुआत कहाँ से हुई? Like everybody has a story. हम पिक्चरों में भी देखते हैं, बेटा पापा को बोलता है, पापा मैं बड़े होके पायलट बनूंगा, पापा मैं बड़े होके डॉक्टर बनूंगा. तो आर्या ने अपने पापा को कब कहा कि मैं बड़े होके क्रिकेटर बनूंगा? शुरुआत कहाँ से हुई? How did you fall in love with this game, Aarya? So my father is already a cricket coach, as you know. Yes. तो बचपन से ही मेरे हाथ में बैट होता था. सोसाइटी में खेलते थे क्रिकेट. तो जब मैं 8-10 साल का था तब तक मैं सोसाइटी में क्रिकेट खेलता रहता था. Then I actually liked the sport. I loved the sport. So I wanted to join an academy. तो पहली बार बैट किस उम्र में पकड़ा था? 2 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में? Maybe 3 or 4. Fair enough. उतनी शार्प मेमोरी तो नहीं है मेरी, but yeah, maybe 3 and 4. Fair enough. And then you started playing about, you're saying when you were about 8 years old in your society. 8, yeah. Then I joined the academy at around when I was 10 years old. फिर वहाँ से 3-4 years I just played normal cricket. It was all fun. सुबह उठता था तो यार सबसे बेस्ट टाइम लगता था वो 4 to 6 academy का टाइम. फिर after a while I in my under 14 I got into my district team. Right. So that was when my father realized that if he puts
efforts in his game, he can make a career out of cricket. पहले सोसाइटी में भी मैचेस होते थे अंडर 14 तो आप बाद में पहुंचे होंगे बट लाइक वी हियर इन सोसाइटीज इन इंडिया सी ब्लॉक वर्सेस डी ब्लॉक ए ब्लॉक वर्सेस एफ ब्लॉक आपके इस तरीके के मैचेस होते थे हाँ रो 1 वर्सेस रो 2 ऐसे सब मैचेस होते थे वंडरफुल ऑल फन एंड गेम्स Wonderful, Aarya. Wonderful. That's super. And everybody in your family, like your father, of course, definitely encouraged you. As you said, your father is a cricket coach. Everybody else, your mother, and like, did your mother have different ambitions? कि नहीं यार, मतलब बहुत हो गया cricket. You know, like my husband is already into cricket. बेटा भी cricket में. Did your mother want something different, or your mother was also equally supportive? So starting में my mom was like, you got to study and all. But very soon after she realized that I was good at it, तो फिर उनने भी बोल दिया कि उनने भी एक्सेप्ट कर लिया कि I should make a career out of cricket. Wonderful. I think family support means a lot. Definitely. It helps you get motivated to another level altogether. But आपने स्कूल की बात करी आर्या, so what I would like to focus on here is स्कूल में, how were you in studies? How did you balance things? Because आसान नहीं होता. Like I was an athlete myself. I was a national level athlete. तो मुझे याद है सुबह 6 बजे, मतलब स्कूल शुरू होता था 8 बजे, लेकिन हम 6 बजे प्रैक्टिस करने पहुंच जाते थे. Then at time we stayed back after school. शाम को प्रैक्टिसेस होती थी, ट्यूशन भी होती थी, पढ़ाई भी होती थी, अच्छे मार्क्स भी लेके आने होते थे. So how did you balance everything? How were you in studies? And did the teachers also kind of have a special corner के यार चल ठीक है ये क्रिकेट में अच्छा है तो इसको इतना नहीं डांटते क्योंकि ये स्कूल का नाम रोशन कर रहा है. So were you in that category? Yes, I was in that category. So up till 10th standard it was very difficult for me, I guess. 8th से 10th जो 2-3 साल थे वो बहुत difficult थे because क्रिकेट में भी बहुत मेहनत करनी थी तब, इवन अभी भी करनी है, बट तब आई वाज स्मॉल, आई हैड टू पुश माई सेल्फ, एंड पढ़ाई में भी आई हैड टू फोकस द सेम वे. तो बहुत डिफिकल्ट था. आई यूज्ड टू, जैसा आपने बोला, सुबह 6 बजे प्रैक्टिस से डायरेक्ट ग्राउंड स्कूल पे जाता था, स्कूल से ट्यूशन से वापस प्रैक्टिस एंड ऑल. तो वो बहुत टफ टाइम था. एंड देन आफ्टर वी एज अ फैमिली डिसाइडेड कि ये करियर बनाना है. Then afterwards we changed school. I went to Ryan International School. तो वहाँ टीचर्स और उन लोग ने बहुत सपोर्ट किया. मेरा अटेंडेंस थोड़ा ऊपर नीचे रहता था because of matches and tournaments and all. तो जब भी मैं जाता था तो they made sure that वो लोग मेरे साथ थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करके मेरे को चैप्टर्स समझाए जो मेरे को नहीं आता था and all. So I really appreciate that. तो उनने भी बहुत मदद की है. So yeah. तो 10th के आर्या बोर्ड्स में कितने नंबर आए बता दीजिए आज यार. मेरे को 70% आए थे. Not bad. Moving on, Aarya, as you said, your teachers were nice, your teachers were supportive, and of course, I've seen that interview as well on the Ryan International YouTube channel. If you guys haven't, आप लोग भी जाके आर्या का वो वाला इंटरव्यू भी देखिए यार, वो भी इंटरव्यू काफी मजेदार है. You'll get to see a lot of insights as well. So Aarya, स्कूल में क्रिकेट के अलावा do you have a Mahendra Singh Dhoni kind of story के फुटबॉल, पहले फुटबॉल से प्यार हुआ या you played a lot of other sports as well, or were you only into cricket? Like we see a lot of cricketers, हमें कहानियां सुनने को मिलती है. धोनी फुटबॉल खेलते थे, एबी डिविलियर्स तो बैडमिंटन चैंपियन, टेनिस चैंपियन, गोल्फ चैंपियन. तो आप किसी और चीज में भी चैंपियन थे, or were you always focused to cricket per se? No, I love the game, but मैं जो पहले जो स्कूल में था वो स्कूल में क्रिकेट एक्चुअली नहीं था. फुटबॉल था, बास्केटबॉल था, स्विमिंग था, तो क्रिकेट नहीं था. तो जब भी स्कूल में था तो आई यूज्ड टू प्ले डिफरेंट स्पोर्ट्स. मैं एक्चुअली अंडर 14 मेरे डिस्ट्रिक्ट सूरत के लिए फुटबॉल टीम में भी खेला हूँ. Wow. Yeah. So you have a back-end story as far as other sports are concerned as well. Yes. तो उसके बाद but it was an easy decision कि ठीक है फुटबॉल भी अच्छा खेलते हो, क्रिकेट भी अच्छा खेलते हो, बट जिंदगी क्रिकेट में बनानी है. So like it wasn't a very hard decision you're saying. वो पैशन था, नेचुरली था वो पैशन. Fair enough, Aarya. Wonderful. That's very good to see. Moving on, Aarya, talking about cricketers, which cricketer did you personally grow up watching, and which cricketer inspired Aarya Desai the most? कि यार इसके जैसा बनना है. टीवी जब देखता था आर्या तो कहता था कि यार इसके जैसा मुझे शॉट खेलना है. I think you already know the answer. It's Virat Kohli. He is a different person altogether. जो उनका बैटिंग है, जो माइंडसेट है, उनकी जो स्किल है, इवन फिटनेस, आई पर्सनली थिंक कि उनने जो इंडियन क्रिकेट को एक डिफरेंट लेवल पे पहुंचा दिया है. एज फार उनकी फिटनेस कंसर्न करती है. उनने जो फिटनेस, जो एक ट्रेंड सेट किया है,
कि you should, it's not just about cricket, it's also about fitness, your recovery, rest, nutrition, everything. So yeah, I still look up to him. He promised to make the Indian cricket team the fittest team in the world. Yes. And so it is right now. I mean, Virat Kohli ne jo kara bataur kaptan, especially in test cricket, Aarya, I think that was phenomenal to see. So Aarya, moving on, as far as your young days are concerned, under 16, under 19, I believe you scored tons of runs against Maharashtra, against Baroda. लगातार आपने रन लगाए. There are a few innings which you've played, even on day 5 when you've scored, you've chased mammoth totals. So tell us about that experience, playing under 16, under 19. Domestic cricket कितना जरूरी है? These days, there's the IPL, there are other leagues around the world, but how important is the base as far as domestic cricket is concerned, Aarya? And how did it probably contribute as far as your growth and development is concerned, not only physically, but also mentally, Aarya? What did you learn? If you could just throw some insights on that, please. Well, first of all, I think that domestic cricket is the backbone of the Indian cricket. Yeah. Even I think that you'll agree. Absolutely. It's the backbone of Indian cricket. And so under 14 में state नहीं खेला था. I started playing for Gujarat starting from under 16. Under 16. So under 16 first year मैं सिर्फ एक ही मैच खेला था. I got out early. But वो एक मैच में ही I realized a lot of things. I learned a lot of things. कि तब तक मेरा mindset क्या था? I'll just keep batting and everything else will follow. But then when I went there, I realized that I really need to work on my fitness. I was not fit at all. मैं तब fitness से भागता था. But then Virat Kohli is your idol. So you have the right idol. Huh? Virat Kohli भी 2008 में कोहली खुद कहता है यार कि वो fit नहीं था. In fact, Virat Kohli was from Delhi, from Vikaspuri, and I know वो momos कहाँ से खाता था जाके. He was also, he liked to indulge. He liked to live life king size. He still, that's the good part is that he still lives life king size, but in a different way. Yeah. So you have a similar story there, I believe. Yes. Please carry on. So I learned a lot of things there. फिर 16 second year में जो भी मैंने जो learn किया था within that 1 year period of time, I tried to implement it. मैंने मेरे fitness पे work किया, मैंने मेरे overall game पे work किया, fielding पे work किया and all. So I kind of implemented it in my second year of under 16. तो वहाँ under 16 second year में then again जो age group change होता है, I went to under 19. In my first year I had a decent white ball tournament, but I got some runs in the 4-day tournament, and I even also got selected for the All India NCA camp. But वो नहीं हुआ because of COVID. So again in 19 first year also I learned a lot of things. जो age group change होता है, even second year में run करके आया था 16 में, तो I thought that it should be easy, but then again जो white ball tournament में run नहीं हुए, I kind of realized a lot of things. तो जो बीच में time मिला, I worked on it and again implemented it. Same 19 last year में भी जो learnings है वो मैं try करता हूँ implement करता रहूँ. I was in the scheme of things for the 2022 under 19 World Cup, but unfortunately I couldn't make it to the team. But again जो Challengers Trophy में मैं select हुआ था, I bowled well, I fielded well. सिर्फ जो couple of starts थे batting में I couldn't convert. तो वही learning है मेरी अभी तक की. So that's what I'm trying to do. I'm trying to implement it in other matches here. And we wish you luck for that, Aarya, because this is a very strong domestic structure. I call it a perfect competition market, as far as Indian cricket is concerned, and especially with the youth. Look at the amount of under 19 World Cups which we've already won. I believe ये 5वां World Cup था जो हम जीते, am I right? So we have quality players, and you're a part of that lot, Aarya, and that speaks volumes of your abilities. And as I said, we personally feel, Aarya, I know you're a very modest guy, but कहते हैं ना हमारा जो दाव है, our money is on you, Aarya, and we really feel that you will make it big, and you will make it to those 22 yards wearing the Indian tricolour, Mr. Desai. Moving on, Aarya, as I said that there is no substitute to hard work. इसमें कोई दो राही नहीं है कि अगर आप मेहनत नहीं करोगे, there's a dialogue. If talent doesn't work hard, right, then hard work overtakes talent. So what I'm trying to say is कि मेहनत नहीं करोगे तो talent का कोई फायदा नहीं है. You practice makes a man perfect. ये बातें सिर्फ किताबी में नहीं लिखी, ये बातें जो हैं जीवन में implement भी होती है. So moving on, Aarya, do you think the fact that your father is in the same industry, देखिए मेहनत तो एक जगह है, मेहनत तो आप कर रहे हैं और मेहनत करना जरूरी भी है, बट मेहनत के अलावा एक चीज होती है गाइडेंस, एडवाइस. सही लोगों से एडवाइस लेना, सही तरीके से गाइडेंस
गाइडेंस लेना, which helps you enable, अगर कभी कभी कोई दिशा दिखा देता है ना आर्या, तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि अगर आप किसी से पूछे कि क्या मैं सही रास्ते जा रहा हूं, अगर कोई बोल दे हाँ आप सही रास्ते जा रहे हैं, तो आपके दिमाग में आपका जो मनोबल है वो दुगना हो जाता है. So my question to you is that you think that your father, being from the same industry, has helped Aarya? For example, कभी किसी क्रिकेटर से मुलाकात हुई, उन्होंने कोई ऐसी चीज कह दी हो जो आपको जिंदगी भर याद रहे, जिससे आपका जो है मनोबल बढ़ा हो, या मे बी सम लूप होल इन योर टेक्निक व्हिच यू फिगर्ड कि यार अच्छा ये मुझे इस खिलाड़ी ने बताया, अब मैं ऐसे काम करूंगा. डू यू थिंक दैट काइंड ऑफ हेल्प? Yes, I think I've been lucky in that way because ये फील्ड में बहुत रेयरली होता है कि फादर एंड सन एक ही फील्ड में. तो एक एडवांटेज है कि he knows the system inside out, so he can guide me in a much better way. And secondly कि उनके पास काफी सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स और IPL प्लेयर्स आते रहते हैं. Right. तो उनके साथ इंटरेक्ट करता हूँ, जो एक्सपोजर मिलता है, उनका जो माइंडसेट है, काफी सारी चीजें सीखने को मिलती है उनसे. Give me a few names, Aarya, if you can. कोई ऐसे खिलाड़ी जिनसे आपको कुछ सीखने को मिला हो, as far as the IPL cricketers are concerned? One would be Dinesh Karthik, DK भैया, and second would be Shubman भैया. So उनसे काफी सारी चीजें सीखने को मिली है. Wonderful, and they are genuinely nice people also. So I've heard. Yes. Cricketing industry में लोग बात करते हैं कि दिल बहुत बड़ा है इन दोनों का. Yes, definitely. काफी सारी चीजें सीखने को मिली है. उनका जो मेंटल अप्रोच है गेम के टुवर्ड्स, उनके वर्क एथिक्स है, डिसिप्लिन है. One major thing that I learned from them was that they could easily switch off from the game. I personally feel that switching off from the game off the field is also very important, because आप पूरे टाइम गेम क्रिकेट के बारे में सोचते रहोगे तो I think you'll be mentally तो आप अगले fatigued. दिन क्रिकेट नहीं खेल पाओगे. So they could switch off very well, and again they could switch on very well. Once they enter the field, they're completely different person. They're so professional, very disciplined and all. They're very focused once they step onto the field. Absolutely यार. और कोई ऐसी चीज जो शायद डीके ने या शुभन गिल ने आपको कही हो, something, some advice probably, which you took home and which you keep with yourself? One advice that stuck to me was, try to keep everything simple. कोई भी जो बड़ी भी, अगर कोई हाई प्रेशर गेम हो या कोई भी मैच हो, बड़ी मैच हो, तो जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा है. तो ज्यादा प्रेशर खुद पे आएगा नहीं. Fair enough यार. आज मैं इनफैक्ट एक इंटरव्यू देख रहा था as far as अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन सन अभिषेक बच्चन, उनका, और वो भी यही कहानी सुना रहे थे यार कि once upon a time अमिताभ बच्चन was struggling. तो अमिताभ बच्चन सुबह 5:30 बजे तक सोए नहीं थे. अभिषेक बच्चन को अपने रूम में बुलाते हैं to just have a chat, और कहते हैं कि यार अभिषेक, my son, आई एम स्ट्रगलिंग इन लाइफ, मुझे आजकल अच्छी मूवीज नहीं मिल रही, मेरा अच्छा काम नहीं हो रहा, आई एम इन लॉस. ये 15-20 साल पुरानी बात है, बट ये इंटरव्यू अभिषेक बच्चन का आज आया था. तो अमिताभ बच्चन अभिषेक को कहते हैं कि यार आई थिंक व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू स्टिक टू द बेसिक्स, आई नीड टू कीप इट सिंपल, एंड इफ आई कीप इट सिंपल एंड इफ आई स्टिक टू द बेसिक्स देन माय लाइफ विल बी बैक ऑन ट्रैक. और अगले दिन ही अमिताभ बच्चन को मोहब्बतें, द मूवी मोहब्बतें, वो यश चोपड़ा के घर जाते हैं, उनको मोहब्बतें मूवी का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है. सो या व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज आर्या दैट व्हेनेवर यू आर कंफ्यूज्ड इन लाइफ, keep things simple, and to not get confused in life also, keep things simple, and and life will not get that complicated. That's a very good lesson. In fact, even if youngsters are listening, if youngsters are watching, Aarya Desai's advice is keep things simple, stick to the basics, and it'll be a good life. It is already a good life. We just need to keep smiling. पतझड़ के बाद आएंगे दिन बाहर के. moving on Aarya. आपने डीके की बात करी, आपने शुभन गिल की बात करी, अब थोड़ी आपकी बात करते हैं आर्या. आपका जो बैटिंग स्ट्राइक रेट है यार, कमाल का है. मतलब 100 से नीचे तो कभी नहीं गिरता. Rarely I see, when I see your scorecards, when I see your records, Aarya, rarely I see you batting under a strike rate of 100. And on the contrary, जहां तक आपकी गेंदबाजी की बात है, आपका इकोनॉमी रेट भी कमाल का है. I believe it's under 4 runs in an over. You can correct me if I'm wrong, but bowling economically, बल्लेबाजी
गेंदबाजी आपकी तेजी से हो रही है, क्या क्या रीजन है इसके पीछे? आप जल्दी में हैं आर्या, और आर यू प्रोबेबली ट्राइंग टू प्ले इट द मॉडर्न वे कि आजकल T20 क्रिकेट है, काफी T10 क्रिकेट भी आ रहा है, देयर आर लॉट ऑफ क्रिकेटिंग फॉर्मेट्स लाइक द 100, और एट द सेम टाइम डू यू थिंक दैट इवन इन टेस्ट क्रिकेट आजकल आपको इस तरीके की बारियां खेलनी पड़ती हैं एंड यू कैन सर्वाइव विद दिस अप्रोच इवन इन टेस्ट क्रिकेट? तो so what are you trying to achieve by this style of play right now, and do you fear, Arya, do you fear कि यार कहीं ऐसा ना हो कि जल्दी में खेलने के चक्कर में जो आपके बेसिक्स हैं, जो आपका बेसिक टेक्निक है, how do you keep everything in balance to not lose your technique and yet adapt to the modern style of play, Arya? See, to be very honest, जैसे मैंने बोला था कि यार जब से बैट पकड़ना सीखा था तब से सिर्फ मेरा तो सिंपल माइंडसेट था कि यार बॉल को देखो और मारो। तो आई थिंक आई एम अ स्ट्रोक प्लेयर। तो जो आप बोल रहे हो कि जो स्ट्राइक रेट 100 की है, वो मेरे को लगता है कि काफ़ी नेचुरल है। मैं एक्स्ट्रा ट्राई नहीं करता हूँ। हाँ, थोड़ा गेम भी फास्ट हो रही है, आपको पता है द गेम इज चेंजिंग क्वाइट रैपिडली, तो उसके साथ भी थोड़ा वो गेम के साथ भी थोड़ा रहना पड़ता है। बट आई फील दैट बैटिंग विद 100 स्ट्राइक रेट और मोर देन 100 स्ट्राइक रेट इज वेरी नेचुरल टू मी। एंड रही बात बॉलिंग की, आई यूज्ड टू बोल ever since I joined the academy, but I never really got a chance to bowl in the state matches. तो इस साल मैं कैप्टन था और टीम की ज़रूरत भी थी, तो I started bowling with the white ball. तो मेरा माइंडसेट सिंपल था कि यार मैं एक एंड में मेरे 10 ओवर में जितने कम रन दे पाऊंगा, ट्राई करूंगा कि जितना रन दे सकूं उतना दूंगा, और सामने के एंड से विकेट्स मिलती रहेगी. सो दैट वाज समथिंग व्हिच वाज नेचुरल टू मी टू, बट या आई नीड टू वर्क ऑन माय बॉलिंग टू. But Arya, a lot of people in the cricketing circuit कहते हैं ना, हवाओं में शोर है कि अगला वॉशिंगटन सुंदर जो है वो बहुत जल्दी आने वाला है. So what do you say about that comparison, Arya? Do you try to bowl like Washington Sundar? Do you make any special effort, or do you follow any specific other bowler? As far as your bowling is concerned, Arya. So first of all, I really appreciate that comparison. मेरे को actually people started comparing me with Washington Sundar in the Challengers Trophy. So instead of batting, I bowl quite similar to him. Even I am a tall off spinner. मैं वही round the wicket flat trajectory से run contains करने की bowling करता रहता. तो वही मैं when he's bowling live matches में, तो I try to see कि वो क्या डाल रहा है, क्या नहीं डाल रहा है, variations pick करने की try करता हूँ, and I try to implement them in the nets. तो ये जो है comparison, वो मेरी bowling की वजह से मेरे को मिला है. Fair enough. That is very modest of you, Arya. And, we really hope that, I would say the sky is the limit, Arya. And, the way you're going, you're improving leaps and bounds, Arya. And we do hope for a very bright future for you. So, Arya, मेरा आपसे अगला सवाल यार ये है कि, so how old are you, Arya, again? एक बार मैं viewers को, because of the time of recording, how old are you right now? एक बार viewers को दोबारा बता दीजिए. I'm 18 as of now. You're 18. So Arya, now my point is, being 18, जब मैं 18 साल का था यार, personally, discipline लाना life में थोड़ा मुश्किल होता है यार. When you're 18, your mind is not matured enough to understand the importance of discipline in life, and being in the tradition, being in the trade you are, being in the sport you are, you do need to realize that, you need to inculcate that, because if you don't, it'll be too late, right? आप 26 साल की 30 साल की उम्र में जब तक नॉर्मल लोग सीखते हैं डिसिप्लिन का मतलब, आपके लिए तब तक तो बहुत लेट हो जाएगा, बस मिस हो जाएगी. In a crowd of 10 people, do you have different dietary, do you want some different food? आपकी डाइट अलग होती है. How do you maintain everything? See, first of all, तो ये गेम ही ऐसी है कि आपको मैच्योर बना ही देती है. तो मैच्योर एंड डिसिप्लिन अगर आप नहीं होगे तो फिर ये क्रिकेट में आप कुछ नहीं कर पाओगे. जितना जल्दी सीखोगे उतना बेटर है. एंड रही बात डिसिप्लिन की, अभी आप मेरे बाजू में आके आइसक्रीम भी खाओगे या कुछ भी करोगे, मेरे को आई वोंट इवन फील टेम्प्टेड. इट्स अ वे ऑफ लाइफ फॉर मी नाउ. वाओ. आई एक्चुअली काइंड ऑफ एंजॉय ईटिंग हेल्दी नाउ. तो मेरे को कोई टेम्पटेशन, कुछ फर्क नहीं पड़ता. वो फेस चला गया है. So Arya, are you a vegetarian? Do you eat meat? Yeah, I eat meat. You eat meat, right? Yeah. So but it's all grilled, Arya? It's all grilled, I guess? Yes, all grilled. So no chicken tikka, no mutton biryani. कभी थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है, but fair enough. वो तो यार विराट कोहली भी कभी जब गुड़गांव आते हैं
तो छोले भटूरे खाते हैं यार. He has this place here. So yeah, कभी-कभी तो चलता है यार. Everybody has a cheat day आर्या. But मुश्किल होता है कि अब आप कह रहे हैं आप बिल्कुल मुश्किल नहीं होता. As you said कि आपके दोस्त आइसक्रीम खा रहे हैं आपके सामने, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता. Yeah, not even parties. They go and party. It's like ठीक है. It's all fine. Wonderful. And you've started to enjoy your comfort food. आप अपना खाते हैं अपना, that's good, Aarya. That's very good. And I believe, if you could, inculcate that discipline at such a young age, even if, you were not an athlete, Aarya, it'll help you in life. This discipline will help you in life. And there's a lot to learn. There's a lot to learn. But Aarya, शुरू में मुश्किल हुआ था क्या? शुरू में मुश्किल हुआ था, or have you always been like this? स्टार्टिंग में थोड़ा था. मैंने जैसे आपको पहले बोला कि यार मैं फिटनेस से भागता ही था. Right. जिस दिन प्रैक्टिस में जिम या रनिंग सेशन या कुछ होता था तो यार मैं सर को फोन कर देता कि मैं बीमार हूँ या किधर बाहर जाना है. या दिस इज ऑल इन अंडर 14 days. बट देन आफ्टर आई रियलाइज्ड कि यार नहीं ज़रूरी है. देन जब मेरे को रियलाइज हुआ ये सब, आफ्टर दैट इट वाज काइंड ऑफ इजी फॉर मी. Fair enough, Aarya. And what advice, would you like to give youngsters your age who are trying to, who dream and aspire to grow up and become a cricketer, Aarya? What advice, would you like to give them as far as discipline is concerned, as far as this sport is concerned? Because we know, Aarya, that this sport can be cruel. We're talking about the fact that this is a perfect competition market. There are only 11 players in a team at the end of the day, Aarya, and about 1 million of them miss out. Only 11 get selected. So what's your advice to the youngsters to keep the josh high? कहते हैं ना, how's the josh? तो वो high sir वाला जो जवाब है ना, वो youngsters में वो वाला जोश कैसे आया आर्या? One message I would like to give would be that one should have a vision and clarity in life. अगर ये दो आपके पास है तो that means you know what you want in life. And once you know what you want in life, it's very difficult to get distracted or lose focus. तो वही एक एडवाइस है कि यार find a vision and clarity in life. Absolutely. Thoughts become things. एक किताब है The Secret, The Power of the Secret. It's a beautiful book, आर्या, और उसमें कहते हैं thoughts become things. अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपके साथ पॉजिटिव ही होगा. So that's very well put, Aarya. I believe this is a very happy interview, and we are having a lot of fun, Aarya. We're learning a lot from you in terms of your discipline, in terms of your journey. It's been wonderful till now. And now, Aarya, let's get to the last segment of our show. It's called The Last Over. So what we'll do is, you're the batsman, I'm the bowler. I'm going to bowl you 6 deliveries, and let's see how you tackle them. Let's see if you get a strike rate of above 100, or if I could break that jinx. If I could probably put you a little down. Let's see. Let's challenge you on 6 questions, Aarya. But time नहीं ले सकते आप, Aarya. सवाल ये है कि आप time नहीं ले सकते. थोड़ा दिल से, थोड़ा दिमाग से, but time नहीं ले सकते. जो दिल में आए वो बोल दीजिए, right? So let's go. So it's a rapid fire round. It's a rapid fire round, absolutely. Boom, boom, boom. So, Aarya, question number 1 is your greatest strength and your greatest weakness, my friend. Greatest strength would be work ethics, and weakness would be sleeping on time. Weakness would be sleeping on time. Wonderful, wonderful. One IPL team you would like to play for in the future, Aarya? KKR. KKR. Fair enough, fair enough. One Indian or international bowler who you would love to hit a 6 against? Mitchell Stark. Michelle Stark. Wow. You challenge yourself, I would say, Aarya, and that is good. That is good. You challenge yourself. मैं बता रहा हूँ आपको, जिस दिन मैंने उनको छक्का मार दिया मैं बैट ड्रॉप सेलिब्रेशन कर दूंगा. और बिल्कुल ऐसा सोचना भी चाहिए यार, because बड़ा सोचोगे तो बड़ा होगा. And Aarya, you also have a face structure like Michelle Stark. I don't know if anybody has told you or not, but your face structure is a little like Michelle Stark, I feel. Moving on, question number 4. One Indian or international bowler you would never like to face? Jasprit Bumrah and Mohammad Shami with the pink ball. Jasprit Bumrah and Mohammad Shami with the pink ball. And also maybe Mohammad Shami with the old ball, Aarya. Jab reverse Mohammad Shami, it gets quite difficult. Have you ever faced them? Have you ever seen Jasprit Bumrah, Mohammad Shami close up bowling in the nets? I've faced once. I've faced Jasprit Bumrah once. Wow. But he was recovering, so full effort se nahi tha, so yeah, I got lucky there. Jasprit, if you're watching. Okay, so my next question is your favorite current cricketer? Virat Kohli. Virat Kohli. Fair enough. और विराट कोहली की अगली सेंचुरी कब आएगी यार?
ये भी आप बता I दो। hope soon. I hope soon. आएगी जल्दी आएगी. IPL Yeah, looking forward to it. Mostly तभी आएगी. चलिए, fair enough. And my last question to you, Aarya, is who will win the IPL 2022, my friend? I think KKR. KKR? Fair Yes. enough. Korbo, Lorbo, Jitbo. Let's see how that goes. So Aarya, my next question to you, and my last question, though we're done with the rapid fire, but before we wrap up this interview, my last question to you is, Aarya, where do you see yourself in the next 2 years? सपना क्या है? हर इंसान का लाइफ में 2-year प्लान होता है, एक 5-year प्लान होता है, एक 10-year प्लान होता है. आपका मैं कहूँ 5-year प्लान अगर मैं आपसे पूछूं, so where do you see yourself in the next 5 years, Aarya? What's the dream, my friend? See, to be very honest, I don't set targets. To be very honest. Yeah, back of the mind में रहता है कि I first have to make my first class debut, IPL, Indian team, everything is there back of the mind में है. मेरा mindset simple है कि यार जहाँ chance मिले perform करो, run बनाओ और fitness training और practice में upskill करो. Everything else will follow. This is something that I've learned recently, that don't chase, attract. So I think that's a very good attitude, Aarya. Focus on excellence. And yes. I think everything else will follow. Everything else will follow. Absolutely, I agree with you. And in fact, I really wish, Aarya, that this is a philosophy. This particular philosophy, everybody else follows as well. क्योंकि बहुत pressure हो जाता है वरना यार. आजकल मैं देखता हूँ media में भी, youngsters. If a youngster scores a century somewhere, the media covers him, which is very good. But at the same time, at times I feel that काफी undue pressure भी आने लग जाता है from a lot of quarters, and a few players actually crumble under that pressure. So if you don't have a lot of expectations, then dards bhi kam hota hai, and it's easier. The journey is easier. The journey is more positive, and and things are more achievable when you look at them in a realistic point of view, Aarya. So Aarya, I believe this was our time. Thank you so much. It was a lot of fun. You, as I said, gave us wonderful insights, Aarya. बहुत मजा आया यार आपकी लाइफ के बारे में जान के, स्कूल के बारे में जान के, अंडर 16, अंडर 19 डेज के बारे में जान के, अबाउट योर आइडल विराट कोहली. We did a rapid fire with you. आपकी कहानियां जानी, आपके स्किल लेवल के बारे में जाना, and I think Aarya, you gave us your time. Team Quick Crack would like to thank you for your time. And as I said, Aarya, you're the future of our country. And we really hope that you go leaps and bounds, you go places, and you make India proud, Aarya. Thank you so much. Thank you so much for having me. I really appreciate it. Jai Hind, my friend, and all the best. All the best. And let's hope you absolutely smoke it to all parts of the ground in the near future. Thank you. I'm sure. Thank you so much. Thank you.